So, welcome back out of meditation. It's always a good practice to check out what does the mind feel like after just some chanting, some 40 minutes of meditation. There can be notice an increase in calmness. Can we notice an increase in awareness, in mindfulness? And can we notice an increase in joy, happiness, contentment? And if these three things, even just a little bit, increase, then our samadhi, our samatha meditation in particular, is moving in the right direction. More calm, more peaceful, more aware, more mindful, more content, more happy. We'll have Mahapanyu very kindly doing a Hindi translation again. My apologies that I can't teach in Hindi, only in English with German accent. Yesterday we talked about the incredible good karma one generates by building a monastery, by contributing to the building of a forest monastery for the Sangha of the Four Quarters. कल हमने जो चर्चा की थी कि किस तरह से जब हम एक आरण्य विहार या एक मोनेस्ट्री में अपना कोई किसी भी तरह का योगदान देते हैं, खास करके एक ऐसा विहार जो कि जो संघ है उसके उपयोग में आने वाला है, तो उससे अर्जित होने वाले पुण्य, उससे अर्जित होने वाले अच्छे कर्मों की कल हमने चर्चा की थी. However, as two upasakas and upasikas, as two followers of the Exalted One, we don't want to be content by just making good karma, by just accumulating punya. We are not content by just aiming at a good rebirth. लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध के सही और अच्छे उपासक हैं, फॉलोवर हैं, शिष्य हैं, तो केवल अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म जो कि एक बेहतर पुनर्जन्म सुनिश्चित करती है, हम केवल उससे संतुष्ट नहीं हो सकते. For sure, it's great to have good punya, it's great to have a good rebirth. It's certainly part of the path. However, it is not yet the complete path. एक अच्छा पुनर्जन्म जरूर जो भगवान बुद्ध ने मार्ग दिखाया है उसका एक अंश है, लेकिन वो अपने आप में जो शिक्षा है उसका एक तरीके से वो शिक्षा पूरी नहीं है अगर हम केवल एक अच्छे पुनर्जन्म, केवल पुण्य, केवल अच्छे कर्मों पे ही अगर हमारा फोकस है तो. We also want to cultivate bhavana. We want to develop meditation, chitta bhavana. We want to cultivate and develop our mind. तो इसका जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत अहम आयाम है, वो अपने मन को भावित करना है. तो जो भावना शब्द है वो हम हिंदी में भी बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे कि पाली में आता है कि मन की अलग अलग जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको हम किस तरह से बढ़ाएं. तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे. We want to cultivate the whole Eightfold Path. We wish to develop samadhi and panya. We develop calmness, samatha, and vipassana inside. तो जब हम भावना की बात करते हैं उसका मतलब है कि जो अष्टांगिक मार्ग है, जो नोबल एटफोल्ड पाथ है, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर डेवलप किया जाए, अपने अंदर भावित किया जाए. और इसके मुख्य आयाम जो हैं वो एक तरफ मन की स्थिरता है, जिसको तकनीकी रूप से जो मार्ग है उसमें समथ भावना या समाधि कहा गया है.
और उसका जो दूसरा आयाम है वो पाली में जो हम पन्या कहते हैं या हिंदी और संस्कृत में जो प्रज्ञा जाना जाता है, वो उसका दूसरा अंश है। However, these two things are not something different. The generosity, dana, and mental cultivation, samadhi and panya, is not two separate things, but we are using generosity, we are using the good karma, the punya, we are producing through generosity as a means to develop samadhi and panya. We are using generosity and good karma as a tool, as a support for our mental cultivation. लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये चीजें अलग अलग हैं। जो हमने कल चर्चा की और जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये अलग नहीं है। जो अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य है, जो हम दान देते हैं, ये हमारी सहायता करता है अपने मन को स्थिर करने में, शांत करने में, प्रसन्न करने में, और इस माध्यम से फिर हम आगे बढ़ के प्रज्ञा, समझदारी या पन्या को भावित कर सकते हैं। तो जो हमने कल चर्चा की थी और जो आज चर्चा की थी, वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं। And I'd like to share a little story of a great master, someone who really understood how these two things work together. How one is a generous person and then uses that generosity to develop the spiritual faculties, to develop the bojjhangas. तो आज हमारे से अजान जो है कहानी हमसे शेयर करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक बहुत उदार दिल इंसान था, और उसने उस उदारता से जो अच्छी मन की क्वालिटीज जन्मती हैं, उनसे कैसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में समाधि और पन्या को कल्टीवेट करने में उस उदारता से जो क्वालिटीज पैदा होती हैं उसकी सहायता ली। And that person is Lady Visakha. तो माता विशाखा का जो सुत्तों में चर्चा आती है, उसके बारे में आज हमें अजान बताएंगे। She is one of the Mahasavakas of the Buddha. तो सुत्तों में उनको एक महाश्रावक की पदवी दी गई है, मतलब कि ये भगवान बुद्ध के एक अग्रमी जो शिष्य रही हैं। The list the Buddha has given us now of the most outstanding disciples in 4 categories: bhikkhus and bhikkhunis, male and female lay disciples. तो भगवान बुद्ध ने जो उनके शिष्य रहे उनको 4 भागों में बांटा। एक तो जो भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं, और साथ ही साथ जो गृहस्थ अलग अलग गृहस्थ जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, मेल्स और फीमेल्स मिला के। तो इस तरीके से जो पूरा भगवान बुद्ध का जो डिस्पेंसेशन है वो इस तरीके से उनके शिष्यों को 4 भागों में बांटा गया है। And among the female lay disciples, upasikas, she was the foremost declared by the Buddha in dana, in generosity. तो जो भगवान बुद्ध की महिलाओं में से जो उनके शिष्य थे, उनमें से माता विशाख को दान में सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया। She also happened to be a billionaire. She was the daughter of a billionaire private banker, and she got married to another billionaire private banker, so she was very rich. So जो विशाखा थी वो एक बहुत ही अमीर परिवार से उनका जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ, और फिर उनके जब शादी हुई तो उसमें भी वो एक बहुत ही अमीर परिवार में गई। The Pali is Seti, and they often translate it as guild master, but I think this is a misleading translation. I think if you imagine a private billionaire banker, that is a better translation of Seti. तो जो पाली शब्द उसको डिस्क्राइब किया जाता है सुत्त में, उसका एक मोटा ट्रांसलेशन जो है वो एक
बैंकर के तरह हम उसको समझ सकते हैं. However, to become a Mahasavaka is obviously a little bit easier if you're very rich, that you become the foremost in generosity. But just by being rich and by giving a lot, just by quantity of giving, you would never become someone declared as a first in dana by the Buddha. तो ये तो जाहिर है कि अगर कोई एक बहुत ही अमीर परिवार में है तो उसके लिए दान देना आसान हो जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध जब किसी को एक महाश्रावक घोषित करते हैं तो वो केवल इसलिए नहीं है कि उसके पास बहुत पूंजी है या वो बहुत दान देता है. So it was kind of the female counterpart of Anathapindika, who was very well known. Anathapindika was the foremost in generosity among the male upasakas. She was the same in the female category. तो जो पुरुष शिष्य थे उनमें अनाथ पिंडिक का नाम आता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ थे दान देने में और संघ को सपोर्ट करने में, और इसी तरीके से महिलाओं में माता विशाख का नाम आता है. The story I like to share is not so well known, unfortunately, because it's in the Vinaya, in the monastic discipline. It's a very valuable story to understand how to develop dana, generosity into samadhi. तो जो कहानी आज हमें अजान बताने वाले हैं वो मुख्य सुत्त पिटक में नहीं आती, बल्कि जो विनय पिटक है उसमें इसका जिक्र आता है. और इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि दान के माध्यम से समाधि या मन की एकाग्रता या मन की स्थिरता कैसे भावित की जाए. So towards the end of a rainy season, which the Buddha spent in Savatthi, where Lady Visakha lived, where she had built the Eastern monastery for the Sangha, she had invited the Buddha and the whole Sangha to offer dana in her home. ये कहानी की शुरुआत जो बारिश का मौसम है, जिसको कि हम तकनीकी रूप से वास बताते हैं, उसके अंत की वो समय खत्म हो रहा था, बारिश का समय खत्म हो रहा था और भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रह रहे थे. श्रावस्ती में माता विशाखा ने एक विहार बनवाया था और इस समय माता विशाखा संघ को एक भोजन के दान के लिए न्योता देती हैं. Those days, it was very difficult to bathe as normally. They would normally bathe in the rivers, also ponds. But in the rainy season, it's very difficult because it's quite dirty, the water, and it easily flushed away, and there's lots of flooding. So what they would do those days is bathing naked in the rain, the monks. उन दिनों में सामान्य रूप से नहाना या स्नान करना बहुत मुश्किल हुआ करता था. ज्यादातर तो जो नदियां होती थीं या छोटे छोटे तालाब होते थे उसमें नहाया करते थे, लेकिन बारिश के मौसम में भी बहुत मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि ऐसे जो पानी के स्रोत थे वो या तो बहुत मैले हो जाते थे या बहुत उसमें तेज बहाव होता था. उसमें नहाना काफी मुश्किल बात होती थी. तो इसलिए उस दौरान ऐसी प्रथा थी कि जब बारिश हो रही होती थी तो तब जो विहार में रह रहे होते थे वो अपने कपड़े उतार के बारिश के पानी से नहा लिया करते थे. So when the meal was about getting ready, Lady Visakha sent one of her servant girls to the monastery to announce to the Buddha and the Sangha, now they may please come, the meal is prepared. तो वापस प्रसंग में हम लौटते हैं. तो माता विशाखा ने जब उनके घर पे भोजन तैयार हो गया तो उन्होंने अपनी एक दासी को विहार में भेजा, मोनेस्ट्री में भेजा भिक्षुओं को बुलाने के लिए कि भाई अब भोजन तैयार है, अब आप आ सकते हैं. However, when the servant girl entered the monastery and they saw the monks bathing naked in the rain, she thought, oh, this is not monks, this is only naked ascetic, a different religious sect in ancient India. And she went back to Lady Visakha and reported, there's no monks, there's only naked ascetics. तो जब ये दासी पहुंचती हैं मोनेस्ट्री में, वो देखती हैं कि भाई इस तरह से कपड़े उतार के कुछ लोग बारिश में नहा रहे हैं, तो उन्हें ये भ्रम होता है कि ये भगवान बुद्ध के भिक्षु नहीं हैं, बल्कि जो उस समय पे अलग अलग दर्शन के, अलग अलग आध्यात्मिक पद्धतियों के और भी
श्रावक हुआ करते थे, उनमें से जो एक तरीके से जिनको हम नागा साधु कह सकते हैं, ये तो एक्चुअली वो लोग हैं। तो वो वापस जाके माता विशाखा को कहती हैं, भाई वहां तो कोई भी भिक्षु नहीं है, वहां तो सिर्फ इस तरह से कुछ नागा साधु हैं। However, Lady Visakha, being very smart, realized that the servant girl is not so smart and sent her again and said, no, please go again and announce it. And then the servant girl came, and by now the monks had entered, after bathing, they had entered their kutis and were all warming up for the meal. So she didn't see anyone. And she went back to Lady Visakha and reported, there is no one in the monastery, it's empty. तो जब वो वापस जाती हैं दासी और माता विशाखा को बताती हैं, तो विशाखा काफी समझदार थी और वो समझ गई कि इस लड़की को समझ नहीं आई है कि वहां क्या हुआ है। तो वो वापस उसको कहती हैं जाने के लिए विहार में और भिक्षुओं को बुलाने के लिए। अब तक जो भिक्षु थे उनका नहाना धोना तो खत्म हो चुका होता है, तो वो अपनी कुटियों में चले गए थे चीवर वगैरह पहनने के लिए। तो जब ये लड़की जाती है विहार में, तो वो देखती है कि यहाँ तो बिल्कुल वीराना छाया हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो वो वापस जाती हैं माता के पास, कहती हैं कि भाई वहां तो कोई भी नहीं है। Sometimes the Vinaya has got some of the most humorous stories in the scriptures. Lady Visakha, of course, realizes what's happening again, that they must be in their kutis and dressing up now. And she sends her the third time. तो आचार्य जी बताते हैं कि इस तरह से विनय में कई बार काफी कहानियां आती हैं जो बहुत ही एक तरीके से दिलचस्प और कई बार बहुत ही हास्यात्मक होती हैं। तो एनीवे, अब इस बार फिर से माता विशाखा समझ गई कि इस लड़की को फिर समझ नहीं आई है कि हुआ क्या है। तो वो तीसरी बार दासी को मोनेस्ट्री में भेजती हैं। But of course, by now it's getting quite late for the meal, and the monks have to finish before noon. So the Buddha uses psychic powers, and he just transfers by psychic power himself and the whole Sangha straight to Lady Visakha's home, or rather little palace, which also solves the problem that they don't have to wade through the floods and the mud. तो अब तक तो बहुत समय हो चुका होता है। जैसा कि हमें पता है, भिक्षुओं को दोपहर से पहले पहले जब सूरज जो है अपनी चरम सीमा पे होता है, जिसको कि हम अमूमन So Lady Visakha is very happy and inspired when, first of all, she was worried that they're now too late and they can't finish the meal, but they arrive in time. They're not muddy, they're not wet with their robes, and she is thrilled and gains even more faith and admiration for the miraculous powers of the Tathagata. तो क्योंकि उनको 12 बजे से पहले खत्म करना है, तो भगवान बुद्ध अपनी जो सिद्धियां हैं उसके माध्यम से पूरे संघ को माता विशाखा का जो भी स्थान था वहां ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो माता विशाखा देखती हैं, अरे वाह, ये भिक्षु तो बिल्कुल ही साफ सुथरे हैं, उन पे कोई छींटे नहीं है, बारिश का मौसम है फिर भी बिल्कुल साफ कपड़ों में आ गए हैं। तो उससे उनकी श्रद्धा संघ में और भी बढ़ जाती है। So with great joy and rapture, she personally helps in serving the meal with her own hands, and of course all the servants help as well. And after the Buddha and the whole Sangha have eaten and are fully satisfied, she approaches the Buddha. तो इस श्रद्धा के एक मन से पूरे संघ को भोजन परोसा जाता है। माता विशाखा खुद भी भोजन परोसने का काम करती हैं अपने बाकी जो उनके घर पे दास और दासियां थी उनके साथ। And she asks for a favor, for a boon, varang in Pali. और भोजन खत्म होने के बाद माता विशाखा भगवान बुद्ध से एक वरदान मांगती हैं। Of course, the Buddha, being very smart, being very wise, is not buying into giving a boon without knowing what it is. Being in India, you probably know in the Ramayana, you can get into big trouble if you sign into a favor without even knowing what they're going to ask you now. तो भगवान बुद्ध बहुत समझदार हैं, बिना ये जाने कि वो क्या चाहती हैं वो ऐसी किसी भी बात से एग्री नहीं करेंगे। और आचार्य जी कहते हैं, जैसे कि हम भारतवर्ष में जानते हैं कि इस तरह के बहुत प्रसंग आते हैं हमारे और ग्रंथों में, खास करके रामायण में, जिसमें कि बहुत दिक्कत
खड़ी हो गई थी जब भी किसी ने किसी वरदान के लिए अपनी अनुमति दी बिना ये जाने कि वो व्यक्ति क्या मांगने वाला है। So the Buddha explains that the Tathagatas are beyond granting favors. तो भगवान बुद्ध माता विशाखा को समझाते हैं कि भाई जो तथागत होते हैं, जो बुद्ध होते हैं, वो इस तरह से वरदान वगैरह की बातों में नहीं आते हैं। But Lady Visakha points out that it is something suitable, beneficial, and when she says that, the Buddha says, "And please speak and explain, what do you want?" फिर माता विशाखा तर्क करती हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो मैं मांगने वाली हूँ वो तो बहुत ही लाभकारी चीज है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा बताइए आपका क्या कहना है, आपको क्या चाहिए। And so she explains that she is not happy about the monks bathing naked in the Ven and looking like naked ascetics. And she asks the Buddha as a favor that she can offer Ven's bathing cloth to the whole Sangha. Because, as she puts it, nakedness is impure, disgusting, and repulsive. फिर माता विशाखा बताती हैं कि इस तरह से जो भिक्षु बिना कपड़ों के बारिश में नहाते हैं वो बहुत उचित नहीं लगता है, और इस परिस्थिति से बचने के लिए वो भिक्षुओं को एक कपड़ा देना चाहती हैं जिसको कि वो अपने आसपास लपेट के फिर नहा सकें। And amazing, this is actually the origin of the Ven's bathing cloth, which we are usually still wearing every day. On that initiative by a female supporter, the Buddha ended up instituting that. We are still using it nowadays. तो उस प्रसंग से इस बात की शुरुआत हुई कि आज भी भिक्षु जो हैं इस तरीके का एक वस्त्र जो है वो बांधते हैं, अंदर अपने जो मुख्य चीवर होते हैं उसके अंदर इस तरह से वस्त्र बांधते हैं। और अजन कह रहे हैं कि ये बहुत ही कितनी बड़ी बात है कि हम आज भी जो कपड़ा यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत, वो उस प्रथा की शुरुआत उस समय करीब 2500 साल पहले इस कहानी के माध्यम से हुई, जो कि एक बहुत ही समझदार महिला शिष्य जो थी भगवान बुद्ध की, उन्होंने इस प्रथा की एक तरीके से शुरुआत करवाई। A second, she had seen the bhikkhunis also bathing naked at the ghat in the river, and she asked the Buddha as a second boon that she wants to offer bathing cloth to the whole bhikkhuni sangha as well. और इसी तरह से कहानियां बढ़ती है और प्रसंग ये भी आता है कि इसी तरह से माता विशाखा ने जो भिक्षुनियां थी वो भी जो नदी के घाट हैं उस पे बिना कपड़ों के नहा रही थी, तो इसी तरह से उन्होंने भिक्षुनियों के लिए भी इसी तरह का एक वस्त्र जो है वो देने की अनुमति भगवान बुद्ध से मांगी। 3, she wants to offer food, special food, to the monks who are newly arriving in Savatthi. और तीसरा वरदान उन्होंने ये मांगा, अनुमति भगवान बुद्ध से मांगी कि जो भिक्षु नए नए श्रावस्ती में आए थे उनको भोजन दान देने की अनुमति। And he wants to offer special food to the monks who are setting out on a journey. और इसी तरह से जो भिक्षु आगे निकल रहे थे, श्रावस्ती से बाहर जाने वाले थे, ट्रैवल करने वाले थे, उनके लिए खास भोजन की व्यवस्था करने की भी उन्होंने अनुमति मांगी, वरदान मांगा। And he wants to offer special food to sick monks or sick nuns, because sick people may have special dietary needs. इसी तरीके से जो भिक्षु या भिक्षुनियां बीमार थीं, किसी तरह से ग्रस्त थीं, पीड़ित थीं, उनके लिए भी खास भोजन की व्यवस्था, क्योंकि कई बार जब कोई बीमार होता है तो उसको एक पर्टिकुलर प्रकार की भोजन की जरूरत पड़ती है, तो इसकी भी उन्होंने अनुमति मांगी। And he wants to offer medicines for the sick monks, and he wants to offer special food, even not just for the sick, but for those monks who are attending the sick, because nursing a very sick person can also be very difficult. आगे बढ़ते हुए माता विशाखा ने अगला जो मांगा, अनुमति मांगी, वो ये थी कि वो जो बीमार भिक्षु भिक्षुनी है उनके लिए औषधियां, दवाइयों का प्रबंध करें, और साथ ही साथ वो लोग, वो भिक्षु या भिक्षुनियां जो बीमार भिक्षु भिक्षुनियों का ध्यान रख रहे थे,
उनके लिए भी खास भोजन की व्यवस्था, क्योंकि जब कोई किसी की ध्यान रखता है, किसी को नर्स करता है, तो उसकी काफी जरूरतें अपनी शायद बढ़ जाती हैं। And finally, she wants to offer yagu for breakfast. That is wise gruel. Not a really substantial meal, but just a light breakfast. Having a little bit of wise soup, wise gruel in the morning, something the Buddha even praised in Anguttara Nikaya, the advantages of that. और आखिर माता विशाखा ने अनुमति मांगी कि सुबह सुबह, जिसको हम एक तरीके से नाश्ता समझेंगे, उसमें वो चावल का, एक तरह से चावल की खिचड़ी या चावल का दलिया वो देना चाहती थी। और अजान बताते हैं कि ये प्रथा तो फिर आगे चल के भगवान बुद्ध ने भी इसकी बहुत तारीफ की। इस तरह के का एक तरल नाश्ते के रूप में तरल पदार्थ का, चावल से बना तरल पदार्थ का सेवन सुबह सुबह, इसको भगवान बुद्ध ने भी आगे चल के काफी सराहा था। And obviously you notice she is very, very rich. As you couldn't ask for that kind of boon. Not just to one monk, she wants to do all these 8 things to the whole Sangha, everyone there in Savatthi, which is the place with the most monks and nuns of all the cities. तो इस तरह से माता विशाखा ने 8 अनुमतियां, 8 वरदान भगवान बुद्ध से मांगे। और अजान कहते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, वो बहुत ही संपन्न परिवार से थी, तो इसलिए वो ऐसी बात कर सकती थी। लेकिन इससे उस समय शायद श्रावस्ती में सबसे बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनियां रह रहे थे। ये विहार बहुत बड़ा था, तो बहुत भारी मात्रा में संघ वहां रहता था, जिसने इससे लाभ प्राप्त किया। However, the Buddha doesn't immediately agree. Instead, he is asking her, why do you want to do that? What is the benefit you see in that? लेकिन भगवान बुद्ध भी तुरंत, उन्होंने तो माता विशाखा की बात नहीं मानी। वो उल्टा उन्होंने सवाल पूछा कि अच्छा, आप ये क्यों करना चाहते हैं? इससे आपको क्या लाभ इसमें दिखता है? Because panya, wisdom, is important in every stages of the Buddhist path. And even if you practice generosity, and it's important to switch on the wisdom faculty and to do it wisely. Now, I remember Venerable Ñānavimala, one of my heroes, being very old in Sri Lanka, and is considered very auspicious to offer the 8 requisites for a newly ordained monk, including the sangati or the robes, a bowl. And you can buy that as a pack in the monk shop. And people would offer that to him, and he would sometimes get 3, 4, 5 alms bowl a day. तो अजान थोड़ा सा एक डाइग्रेशन उन्होंने हमें, ये सारी कहानी को समझाने के लिए वो हमें ये बताते हैं कि जो दान है वो प्रज्ञापूर्वक दान होना आवश्यक है। और वो एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत ही सीनियर भिक्षु वेनरेबल ञानाविमला के साथ वो रहा करते थे श्रीलंका में। और उस समय ये प्रथा थी, अभी भी है, कि जब कोई नए भिक्षु का ऑर्डिनेशन होता है, या उस समय जो गृहस्थ हैं वो जो उनके मूल आवश्यकताएं हैं जो एक नए भिक्षु को जरूरी होती हैं, जैसे कि पात्र, चीवर, इस तरह से वो दान किया करते हैं। तो अजान बता रहे हैं कि ऐसा हुआ करता था उस समय जब वो वेनरेबल ञानाविमला के साथ रहते थे, कि किसी एक भिक्षु को 3-3, 4-4 भिक्षा पात्र लोग दे रहे हैं। So it's obviously a very good intention, but what is this old monk who is lying in bed, bedridden, and needs nursing care? What is he going to do with half a dozen alms bowl a day? I'm using my alms bowl for the last quarter century. तो अजान आगे अपना खुद का उदाहरण बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि हालांकि जो लोग ये दान दे रहे हैं उनकी चेतना तो बहुत अच्छी है, वो तो चाहते हैं कि वो मदद करें, लेकिन ये सोचने का विषय है कि कोई भी एक भिक्षु इतने सारे भिक्षा पात्रों का क्या करेगा।
वो अपना खुद का उदाहरण देते हैं। वो जो पात्र जो बोल यूज कर रहे हैं वही एक ही बोल वो पिछले 25 साल से यूज कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक भिक्षु को एक पात्र की इतने सारे पात्रों की जरूरत पड़ेगी। On the other hand, they had no tissues, they had no rubber gloves, the things which are very cheap, but which are very helpful when you look after a sick person. But people didn't use their wisdom to find out what is actually really useful. तो आगे उदाहरण बढ़ाते हैं, वो कहते हैं लेकिन हालांकि लोग अपनी उदारता से, अपने दान की भावना से इतने सारे पात्र दे रहे थे, लेकिन जिन चीजों की शायद वेनरेबल ज्ञानाविमला को जरूरत थी, जैसे कि बहुत सामान्य चीजें जैसे कि पेपर नैपकिन्स या टिश्यू पेपर्स, इस तरह से सामान्य चीजें जिसका कि वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो उनको दान नहीं दिया जा रहा था। तो वो ये उदाहरण से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो है कि हमारे मन में उदारता हो, लेकिन वो उदारता अगर समझदारी के साथ नहीं होगी तो उसका शायद इतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो मूल मुद्दा इसमें दान और समझदारी, प्रज्ञा को जोड़ने की बात जो है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं अजान। But not so Lady Visakha. She could tell the Buddha exactly why she feels these 8 things are really useful. It's obviously not very inspiring when the monks or the nuns are bathing naked. लेकिन माता विशाखा बहुत समझदार थी, तो वो भगवान बुद्ध को अच्छी तरीके से ये समझा पाई, बता पाई कि वो ये दान क्यों देना चाह रही हैं, जो 8 बिंदुओं की उन्होंने बात की थी। She understood that it can be very difficult if a monk newly arrives in town, he doesn't really know where to go for alms round. It may be too late. Like when I came, even I just made it for the dana here. But if I had to go alms round, it would have been very tough. Where do you go and do you get some food before noon? So she had very carefully considered that. तो ये उदाहरण है कि माता विशाखा ने बहुत सोच समझ के इन बिंदुओं पे अनुमति मांगी थी। उदाहरण के तौर पे कोई नया भिक्षु अगर एक शहर में पहुंचा है तो उसको शायद पता भी नहीं होगा कि उसको भिक्षाटन के लिए कहाँ जाना है, या हो सकता है जो भोजन का समय है वो खत्म होने वाला है, 12 बजने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस तरह की अनुमति मांगी जिससे कि जो नए भिक्षु आए हैं उनको तकलीफ, उनको दिक्कत ना हो। The same for the monks when you set out on a journey. Those days on foot, you want to leave early, you don't want to get into the big heat. But then how do you do that with dawn? And then you cannot really go alms round. So she had this strong empathy. She really looked and carefully observed. And then she found something that is really, really helpful. इसी तरह से जो भिक्षु जो कोई किसी एक जर्नी पे जाने वाले हैं उनके लिए जो उन्होंने खास भोजन तैयार करने की जो अनुमति मांगी, वो भी इस गहरी समझदारी पे आधारित थी कि जब कोई भिक्षु कोशिश कर रहा है कि गर्मी बहुत बढ़े उससे पहले वो निकल जाए, क्योंकि उस समय पे तो नेचुरली सब लोग पैदल ही चला करते थे। तो ऐसी स्थिति में पहले खाना इकट्ठा करना, भिक्षाटन पे जाना और उसके बाद निकलना काफी मुश्किल हो सकता था। तो इसीलिए ऐसी खासकर ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति में भिक्षुओं को दिक्कत ना हो, इस समझदारी के आधार पे उन्होंने ये अनुमति मांगी थी। The same with the sick monks. Normally monks try to be very content to consume whatever is given. But if you're really sick, you may not be able to do that. And of course, you also need special medicines. And she has carefully thought about that and figured that out. और इसी तरीके से जो बीमार भिक्षुओं के लिए उन्होंने अनुमतियां मांगी अलग अलग, वो भी उनकी समझदारी पे आधारित थी कि भाई जब कोई बीमार होगा तो उसको जाहिर सी बात है औषधियों की, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास प्रकार के भोजन की जरूरत पड़े। So for all the 8 things she wanted to do, she gave a really good explanation to the Buddha and was all very smartly figured out and was really beneficial and helpful. तो जो सारे 8 बिंदु थे, इस तरह से माता विशाखा बहुत अच्छी तरीके से ये समझा पाई, बता पाई कि ये चीजें वो क्यों मांग रही हैं, और वो बहुत ही सोची समझी उनकी एक उन्होंने बात को अच्छी तरह से सोच समझ के प्रज्ञा से समझ के फिर इस पे भगवान बुद्ध से अनुमति मांगी थी। However, the Buddha was still not satisfied yet.
Now, this was like external, this is the external benefits. But he starts asking her a second time, now what other benefits do you see in these 8 boons you're requesting? लेकिन भगवान बुद्ध अभी भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। ये जो 8 चीजें थी, ये तो एक तरीके से बाहरी कारण है, ऊपर के कारण है। तो आगे वो माता विशाखा को और पूछते हैं कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन और क्या कारण के हैं कि आपने इस तरह के अनुमतियां, इस तरह के वरदान मांगे। And being a very wise person, she gets what the Buddha means, and now she explains the internal benefit. और माता विशाखा भी बहुत समझदार है, तो वो ये समझ जाती हैं कि भगवान बुद्ध ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो अब एक तरफ जब उन्होंने ये बाहरी प्रत्यक्ष कारण बताए, अब वो हमें बताने वाली हैं कि अंदरूनी कारण क्या है इन अनुमतियों के। And now she explains, and she says that often when monks visit after the rainy season at other occasions, a monk or nun have passed away, and they are asking the Buddha where they have been reborn or if they attained a full release, full nibbana. And then the Buddha often declares that this monk or this nun has attained full nibbana, that they are arahants and released and not reborn anywhere. तो अब कहानी आगे बढ़ती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी जो भिक्षु हैं भगवान बुद्ध से आके पूछते हैं कि अच्छा फलाना जो अभी गुजर गए हैं, उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। And then Lady Visakha would reflect, and first of all she would be quite sure that this monk or nun has been to Savatthi, because that's the place where the Buddha spent 25 rains retreat, the main place where the Buddha stayed. So all the monks and nuns would occasionally go there and visit. She would feel confident that this monk or nun who has attained Nibbana has been in Savatthi. तो क्योंकि कई सारे भिक्षु भिक्षुनियां श्रावस्ती आया करते थे, माता विशाखा को ये एक तरीके से विश्वास था कि उनमें से कई जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, ये बहुत संभावना थी कि वो अरहंत फल की उन्होंने प्राप्ति की होगी, उन्होंने पूरी तरीके से उनके चित्त शुद्ध हो गए थे मृत्यु से पहले। And if they have been in Savatthi, she would feel very sure that they would have partaken of food for arriving monks or food for leaving monks, or they may have got a rains bathing cloth from her, or they may have got medicines or food when they were sick, or they may have got the breakfast wise school. And then she would understand that she actually had done something to support that monk or nun, that person, to realize Nibbana, to attain enlightenment. She has supported that with her offerings. तो यदि कोई भी भिक्षु या भिक्षुनी श्रावस्ती में कभी आया हो, तो माता विशाखा को ये फिर एक तरीके से विश्वास हो सकता है कि उस भिक्षु या उस भिक्षुनी की जो भी आध्यात्मिक जीवन था, जो भी उनकी प्राप्तियां थीं, खास करके अगर उनकी चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया था, तो उस पूरी प्रक्रिया में उनका भी एक तरीके से योगदान रहा होगा उन 8 बिंदुओं के माध्यम से, जो कपड़ों की बात हुई, जो भोजन की बात हुई, दवाइयों की बात हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। And she explained, if she reflects like that she actually has contributed in supporting someone to gain the greatest benefit for themselves and all beings, to become enlightened, to become an arahant, to realize Nibbana. If she reflects that she supported that with her offerings, then she feels pāmoja, she feels gladness arising in her heart. तो माता विशाखा भगवान बुद्ध को बताती है कि जब मैं इस तरह से विवेचन करती हूँ, इस तरह से सोचती हूँ कि किसी भी भिक्षु या भिक्षुनी ने
की जो प्राप्तियां हुई हैं, जो सिद्धियां हुई हैं, उसमें मेरा योगदान रहा है किसी तरीके से, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है जिसके वजह से वो अरहंत फल को प्राप्त हुए हैं। तो जब मैं इस तरह से सोचती हूँ, जब मैं इस तरह से विवेचन करती हूँ, तो मन में बहुत प्रसन्नता, मन में बहुत प्रमोद जागता है। And she explained to the Lord Buddha that someone who experiences the primordial gladness that will develop and gradually grow into piti, into rapture. तो फिर आगे भगवान बुद्ध को बताती हैं कि भाई जब किसी के मन में इस तरह से प्रसन्नता, इस तरह से प्रमोद जागता है, तो उसका जो अगला चरण होता है वो एक प्रीति की भावना है, एक जो प्रसन्नता है वो एक तरीके से अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है। And she explains when she experiences rapture, then her body will become completely tranquil. She will have Nakaya Pasadi. This is this tranquility which you develop when you develop Samadhi. Basically, she describes now how the heart attains Samadhi. Because that tranquility, that Kaya Pasadi, this is what makes it possible that people sit all night, and when they get up in the morning, their knees are not ruined. They can get up and after sitting all night, and the body is still okay. It's not just by willpower, but if they do have Samadhi, it is a rapture in which causes this complete tranquility of body that they can sit so long. तो माता विशाखा फिर आगे बताती हैं कि भाई जब इस तरह से प्रीति का अनुभव होता है, उसका अगला चरण जो है वो ये है कि पूरे शरीर में एक तरीके से प्रशब्दी, जिसको अजान ने अंग्रेजी में ट्रैंक्विलिटी बताया, प्रशब्दी की एक भावना महसूस होती है, जो कि एक तरीके से एक समाधि भरे चित्त का एक इंडिकेटर है। तो अजान ने फिर एक थोड़ा डाइग्रेस करते हुए हमें बताया कि जब आप देखते हैं या आप सुनते हैं कि कोई सारी रात समाधि में बैठता है और सुबह जब वो उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको घुटनों में बहुत कोई तकलीफ हो रही होती है। तो ऐसा जब होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने सिर्फ दृढ़ निश्चय के कारण वो बैठ सके हैं, पर वो इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर है, काया जो है, उसमें इस तरह की प्रशब्दी पैदा होती है, इस तरह की ट्रैंक्विलिटी पैदा होती है, जब मन बहुत समाहित हो जाता है, जब मन एक तरह से पूरी तरीके से समाहित हो जाता है। तो माता विशाखा इसी चीज का भगवान बुद्ध को वर्णन कर रही हैं कि किस तरीके से दान के माध्यम से वो खुद अपने चित्त में इस तरह से समाधि एक्सपीरियंस करती हैं, और इसमें अजान ने काया शरीर की प्रशब्दी के बारे में बताया। And she explained to the Buddha, Passatta Kayo Sukhang Vedeti. If one has a completely tranquil body, one will experience bliss. तो माता विशाखा भगवान बुद्ध को बताती हैं कि जब इस तरह से शरीर में प्रशब्दी जागती है, तो एक बहुत ही सूक्ष्म तरह का सुख मन में जागता है। And she explains, Sukhino Chittang Samadhiyati. There's someone who experiences bliss, their mind will unify in Samadhi, will attain Samadhi. और ऐसा सुख जिसके मन में जागता है, उसका मन समाहित हो पाता है, उसका मन एक तरीके से पूरी तरीके से समाधि को भावित कर लेता है। And then she explained, that when she attains Samadhi, that will allow her to fully unfold the 5 spiritual faculties of faith, energy, mindfulness,
samadhi and wisdom that will allow her to fully develop the whole Eightfold Path, that will allow her to develop the 7 Bojjhangas and basically realize the Dhamma herself. आगे माता विशाखा भगवान बुद्ध को वर्णन करती हैं कि भाई जब इस तरह से मन पूरी तरीके से समाहित हो जाता है, ऐसा समाहित मन जो 5 बलों का वर्णन है या 7 भुजंगों का वर्णन है, ऐसा समाहित मन वो 5 बल या वो 7 भुजंग भावित करने में सक्षम हो पाता है. And the Buddha said, bingo, you've got your 8 boons. Actually, he didn't say bingo, but he agreed. He said, no, you do that. I'm happy with that. You go ahead, do that. तो ये सुन के भगवान बुद्ध बहुत ही प्रसन्न होते हैं और माता विशाखा को उनसे उन्होंने जो वरदान मांगे हैं एक तरीके से या जो अनुमतियां मांगी हैं वो उनसे एग्री करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, आपने इस तरीके से दान का आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक तरीके से भूमिका समझी है. Because I was so impressed. First of all, how she has an understanding now of mental development, or she has an understanding now how you cultivate bhavana in your heart. तो भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न इस बात से हुए कि माता विशाखा को बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ आया कि दान के माध्यम से, उदारता के माध्यम से चित्त को समाहित करते हुए पूरी तरीके से मन को प्रज्ञा में भावित कैसे किया जाए. Because she didn't explain the benefit as, oh, I want to be reborn in Devaloka and I want to be, the queen of the Devas. She didn't say, I want to have heaps of karma, that I will be always a billionaire in my future lives. This is not wrong, but her aim is much higher. She wanted these boons because she wanted to practice dana to support her own practice of bhavana so that she can realize the Dhamma herself. भगवान बुद्ध खास प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि माता विशाखा ने जो दान के माध्यम से अच्छे कर्म या पुण्य अर्जित होता है, उसके जो एक तरीके से लोकीय बेनिफिट्स जो हैं, उदाहरण के तौर पे देवलोक में पुनर्जन्म या भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों में पुनर्जन्म हो जहाँ पे कि आर्थिक संपन्नता उनकी बनी रहे, वो केवल इस तरह के जो सामान्य बेनिफिट्स हैं उस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनमें ये समझदारी थी कि दान के माध्यम से किस तरह से पूरा भगवान बुद्ध का मार्ग है उसको पूरी तरीके से कैसे भावित किया जा सकता है मार्ग के अंत तक. In particular, she understood what is required for the mind to unify in samadhi. खास करके माता विशाखा को ये पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ थी कि मन को अगर पूरी तरीके से समाहित होना है, उसके क्या कारण होते हैं, वो समाधि किस तरीके से प्राप्त की जाए. In other places, the Buddha explains it basically in exactly the same phrases. And this is so important for us to understand. You cannot just force that by sitting and willpower. This is not sufficient. You have to look at the sequence exactly how Lady Visakha and also the Buddha, of course, explained it. तो माता विशाखा ने जिस तरीके से जिस प्रक्रिया का वर्णन किया जिसके अंत में मन समाहित होता है, बिल्कुल वही प्रक्रिया भगवान बुद्ध ने और परिस्थितियों में और सुत्तों में और स्थितियों में बिल्कुल इसी प्रक्रिया को समझाया है. तो अजान कह रहे हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक समाहित मन है वो केवल जोर जबरदस्ती से या दृढ़ता से हासिल नहीं हो सकता है, बल्कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेजेस हैं, इनके माध्यम से मन पूरी तरीके से समाहित होता है. It starts with this pamodra, with that gladness, and she generated that gladness by reflecting on her generosity and how her generosity helps other beings to realize freedom and enlightenment.
तो पहला उसका कदम जो है वो प्रमोद है, मतलब बेसिक प्रसन्नता है। माता विशाखा ने ये प्रसन्नता या ये प्रमोद की स्थिति अपने मन में पैदा की इस बात को याद करके कि उनके माध्यम से और लोगों को कितना लाभ हुआ और लोगों का कितना फायदा हुआ और भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को किस तरह से उनके दान से फायदा हुआ। But one can also use a reflection on one's virtue, for example. If one keeps the precepts and then reflecting on virtue and reflecting how beneficial that is for other beings, for one's own progress, again, you can generate that gladness. तो अजान बताते हैं कि ये जो मन की प्रसन्नता है या प्रमोद की जो स्थिति है, ये और तरीकों से भी पैदा हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने अगर हम शीलों का अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं, तो जो हमारा खुद का आचरण अच्छा है, ठीक है, तो उसको याद करके भी इसी तरह से मन में हम प्रसन्नता, प्रमोद जगा सकते हैं। Or you can reflect on the qualities of the Buddha. Itipiso bhagava adahang samma sambuddho vicca charana sampanno. And by reflecting, reflecting on the qualities of the Buddha, and you generate that pamodra, that gladness. Or you develop metta bhavana, and by having the intention of unconditional goodwill to all beings, you develop that gladness, that pamodra. इसी तरह से अजान आगे बढ़ के हमें बताते हैं कि प्रमोद जगाने के दो और तरीकों की वो भी बात कर रहे हैं। एक तो कि जो भगवान बुद्ध के गुण हैं, जब हम उन गुणों को याद करते हैं, जो कि हमने चैंट भी किया, जब हम उन गुणों को याद करते हैं, इससे प्रमोद जाग सकता है। इसी तरीके से जब हम मन में मैत्री भाव बना के रखते हैं, ये भी मन की प्रसन्नता या प्रमोद का एक स्रोत हो सकता है। That is the way into samadhi, not just sheer force or brute willpower or something like that. And you have to go through this gladness based on a very wholesome mental object or reflection. तो समाधि का जो सही तरीका है भगवान बुद्ध के रास्ते में, भगवान बुद्ध के मार्ग में, वो इस तरह से मन की प्रसन्नता से गुजरता है, बजाय इसके कि जोर जबरदस्ती और सिर्फ अपनी दृढ़ता के आधार पे समाधि डेवलप की जाए। वो नहीं हो सकता है। बेसिकली वो प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता से ही सही समाधि डेवलप हो सकती है। And then you deepen that gladness until rapture is born, until the whole body is suffused with rapture, which means that the body becomes completely tranquil. You wouldn't even budge if a mosquito bites you or something is itching on the body, because the body is so tranquil, kaya pasadi, that all fidgeting, all itching, you don't notice anymore. और फिर अजान आगे बताते हैं कि इस तरह की जो एक सामान्य मन में प्रसन्नता की स्थिति है, उसको हम और गहरा बनाते हैं, और जब हम उसको और गहरा करते हैं तो वो प्रीति से होती हुई फिर, जिसको ये पाली में काया पसद्दी उन्होंने बताया, शरीर में एक प्रशब्दि की भावना, शरीर में अत्यंत स्थिरता की भावना, ऐसी स्थिरता जिसमें कि जैसा अजान ने कहा कि अगर आपको मच्छर भी काटता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो भी उसका एक तरीके से एहसास नहीं होता है। And the tranquil body, experiencing bliss, that great mental happiness, which makes you forget all these worldly inputs, which makes you forget the five external senses, and allows the mind to unify in rapture and bliss and samadhi. और जब ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है, तो एक तरीके से मन, जो हमारे 5 बाहरी आयतन हैं, उनसे एक तरीके से हमारा मन कट जाता है, और जो भी बाहर से इनपुट्स आ रहे हैं, वो मन को अब प्रभावित नहीं करते हैं, और इस स्थिति में हम कहते हैं कि मन पूरी तरीके से समाहित हो गया है। And as Lady Visakha pointed out, again, very similar to
what the Buddha himself always points out, the mind imbued with samadhi is able to fully cultivate the factors of enlightenment, to fully unfold the spiritual faculties, and to realize nibbana and freedom. और जैसा भगवान बुद्ध भी कई सुत्त में बताते हैं, और जैसा माता विशाखा ने इस सुत्त में कहा, एक पूरी तरीके से एक समाहित मन ही है जो कि जो 5 बल हैं उनको पूरी तरीके से भावित कर सकता है, या जो 7 बोधि के अंग हैं उनको पूरी तरीके से भावित कर सकता है। तो अगर हमें बोधि के अंगों को भावित करना है, हमें बलों को भावित करना है, उसका एक इमीडिएट कारण जो है वो इस तरह का समाहित मन है, जिसका कि अभी विवरण अजान ने किया। So my suggestion is that we follow the example of Lady Visakha, and that we use generosity not only to accumulate good karma and have a happy rebirth, that is all fine and good, but we go beyond. We use generosity as a means, as a tool to generate that happiness, that paramodja, which then deepens into rapture, into tranquility, into bliss, into samadhi, so that we can fully realize the Dhamma. तो आगे अजान बताते हैं कि हम इससे ये शिक्षा लें इस सुत्त से कि जो दान हम करते हैं, या जो भी हमारी उदारता है, जो भी हमने अच्छे काम किए हैं, उसके माध्यम से केवल एक जो भौतिक उसके लाभ हैं, जो कि हैं कि भविष्य की परिस्थितियां अच्छी बने या पुनर्जन्म अच्छे हों, केवल उस तक अपने आप को सीमित ना रखते हुए कोशिश ये करें कि हमारे दान की भावना, उदारता के माध्यम से हम इस तरीके से मन को प्रसन्न करते हुए पूरी तरीके से समाहित करें। तो जो कल का सारा प्रसंग था अच्छे कर्मों का, पुण्य का, उसको हम केवल सामान्य भौतिक बेनिफिट्स तक सीमित ना रखते हुए इस तरह से भगवान बुद्ध के मार्ग को पूरा करने की कोशिश करें। Thank you for your patience. Okay, that's what I have from my side. Is there anything unclear, any urgent request, anything I said not in line with Dhamma Vinaya? Comment? So Ajahn, I have a question. Yeah, please. So Ajahn, as I understood that doing generosity, wholesome deeds, we generate gladness, rapture in our mind, and then take it forward towards the bliss and tranquility and samadhi. And then this samadhi, which is based on precursor of gladness, rapture, and bliss, leads towards the further insight and wisdom. Is that the way we should understand the path? Yes, that's exactly correct. You see, here I have focused on the part where you use generosity in up to samadhi, just like Lady Visakha. I didn't really explain much how you use then samadhi to develop wisdom, insight, to realize nibbana. Because even in that story, the Lady Visakha only pointed out that once the mind attains samadhi, she can develop the 5 indriyas and the 7 bhujangas, the 7 factors of enlightenment. But she didn't go into details. And there's a limit, and it's already almost 9 o'clock. Particularly with a translation, it takes more than twice as long when you're talking.
and it's not really possible to do all in one talk. But you're completely correct that obviously it doesn't end with only samadhi, but the samadhi is the basis for vipassana, for insight, for wisdom to arise. And it's a wisdom that cuts defilements completely. You can't do it with only samadhi. The samadhi is only the basis to develop wisdom and insight that is able to cut away the defilements and allow you to fully realize Nibbana. Maybe we can go into wisdom a little bit more tomorrow. I tried to do it a little bit also gradually. Yesterday we talked about generosity, in the morning about metta, and now how to deepen your generosity and other reflections to attain samadhi. Maybe we can talk more about developing wisdom and insight then tomorrow. But very good comment, yeah. You're quite correct. And then is it right to understand that for a cultivation of samadhi, which is right concentration, then gladness and rapture become one of the important factors in cultivation of wholesome samadhi? Exactly. Exactly, because so many people try so hard and then they give up. Oh, I can't do samadhi. Body too restless. If the kaya passaddhi isn't there, then it will be very difficult to sit for hours. The mind not calming down, too much thinking. This is not only Lady Visakha saying that. This is one of these stock formulas, or the Buddha explains it as well. We're going through this process of pamoja, the gladness, into piti, into rapture, into bodily tranquility, into bliss, and then the mind can unify in samadhi. That's the main point I try to make. That's the point Lady Visakha made. That's the point the Buddha brings up in countless places in the scriptures. This is a revolutionary thing of the Buddha, sukhena sukhang antiganta bang, to attain the highest happiness by means of happiness. But people often think no pain, no gain. And I really want to become enlightened, I have to go through tremendous pain. And for sure, there will always be tough and rough patches in our practice, stretches. And occasionally we have to endure and push and so on. But it's very, very important to use wholesome joy and happiness, in particular for developing samadhi. Thank you, Ajahn. And Ajahn, we are also live. There are people who can ask questions online, if you permit. Yeah, I'm fine. Shall we maybe close the session, that those who have to go can go, and I'm happy to still continue for more questions? Or, okay. What do you think? Is that good? Or let's see, how many questions do we have? Is there anyone? Maybe please go ahead. Yeah. Any comments, questions? I think no one here, so maybe we can just check if someone who is joined online has some from the Zoom, yeah. Yeah, over the Zoom. If people have some questions over Zoom, maybe they I was very happy to hear that we have people joining even in Saudi. Yesterday, that lady was from Saudi Arabia, working as a doctor there. If someone has questions over Zoom, maybe you want to try unmuting and asking your question. I think then no questions online also. I'm very happy. I expressed myself clearly enough.
we had such a good translation. But no questions are left. Are there one? I think maybe that is too much now. And if I go in the whole thing, maybe we try to do that tomorrow. Because I think people get tired. And then you may get a negative idea about Dhammagiri if that is the very last end and you have to go to the bathroom. You have to go back to the kids and to the golden retriever. And Dhammasiha is talking for a long time about his monastery. Then you think, oh dear, Dhammagiri. So better tomorrow. Okay, let's close the session formally. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. And Anumodana to you for running the high-tech setup. If people have never done that, I know it from Dhammagiri, it can be fiendishly difficult to get the audio right, to get it all right, because this is the most difficult setup, where you have a live audience and you have a microphone with a loudspeaker in the live audience, and at the same time you have got live Zoom. That's really, really tough, and Anumodana for you for looking after that.